प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के चैप्टर में इथाइलिन है लास्ट टॉपिक. इथाइलिन, which is so well known as a product of combustion and as a common air pollutant, is surprisingly a powerful plant hormone. It is a gas, ethylene, we know, and is produced in minute quantities by plant tissues, but is active at extremely low concentrations, well below 1 part in 10 million of air. It is synthesized in the plants from the amino acid methionine. It is not easily soluble in aqueous medium and volatilizes into the intercellular spaces from where it is released in the outer atmosphere. इथाइलिन ही एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि गैसियस रूप में उपलब्ध होता है और ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्लांट टिश्यूज़ के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन में ये एक्टिव होता है और प्लांट्स के अंदर ये मीथियोनिन एमिनो एसिड से बनता है. एक्वस मीडिया या पानी में ये सॉल्युबल नहीं होता है और इंटरसेल्युलर स्पेसेस में जाकर के ये बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है. द हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन एज अ प्लांट हार्मोन स्टार्ट्स विद 19th century when plant growers noticed the effect of smoke and burning gases on the plants. But the first recorded effect can be credited to the Russian botanist Dmitry N. Neljobov in 1901, working in the St. Petersburg, who demonstrated that ethylene affects plant growth. He also established that ethylene was emanated from illuminating gases and it had 3 types of effects on pea seedling stem: elongation, stem thickening, and horizontal growth. The first report that plant materials evolve ethylene came from H. Cousins in 1910, who observed that when oranges and bananas were stored together during shipping, some gas was emanated from oranges, which caused the ripening of bananas. In 1934, R. Gain provided chemical proof that ethylene was produced by ripe apples. Since then, it has been shown that ethylene is produced from essentially all parts of higher plants. Croker et al. In 1935 made first proposal to include ethylene as a natural plant hormone. बायोसिंथेसिस के अंदर ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस इथाइलिन. सभी प्लांट्स जो है उनके अंदर इथाइलिन बनती है. अमीनो एसिड मीथियोनिन जो है इट इज़ द मेजर प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन. ये स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो मीथियोनिन होता है. द थर्ड एंड फोर्थ कार्बन of methionine is converted to ethylene. The other eventual products of methionine metabolism are carbon dioxide, formic acid, ammonia, and methyl S-adenosine or some other methyl compound. Both the ammonia and methyl thio group can be metabolized back into methionine, thereby conserving nitrogen and sulfur, allowing synthesis of ethylene to continue. ये देखिए आप स्ट्रक्चर ऑफ ए, ये तो है इथाइलिन एंड दिस इज इथेफॉन. पाथवे ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस में इन द फर्स्ट स्टेप द मीथियोनिन इज एक्टिवेटेड विद ATP and is converted to S-adenosyl methionine SAM and pyrophosphate is liberated. This reaction is catalyzed by the enzyme SAM synthetase ATP methionine S-adenosyl transferase. The next step in the biosynthesis of ethylene is the conversion of SAM to ACC, A-amino cyclopropane
carboxylic acid, which is catalyzed by the enzyme ACC synthase. This step is believed to be the rate-limiting step in ethylene production, and any factor influencing the activity of ACC synthesis influences ethylene production. Accordingly, auxins, stress factors such as wounding, chilling, drought, or pathogens, which include ethylene production, increase the ACC synthase activity. In water-logged conditions also, more ethylene is produced apparently due to activation of ACC synthase. The final step in the biosynthesis of ethylene is oxidative cleavage of ACC to form ethylene, carbon dioxide and hydrogen cyanide by the enzyme ethylene forming enzyme EFE, which is also called as ACC oxidase. HCl is ultimately converted to form formic acid and ammonia. This reaction requires oxygen and is activated by light. Thus, the fate of various groups in methionine molecule can be represented as follows. ये आप देखिए यहाँ पर इस फिगर में बताया गया है किस तरह से इथाइलिन का बायोसिंथेसिस होता है। सबसे पहले ऊपर मिथियोनिन या मैट जो है ये एस एडिनोसाइल मिथियोनिन बना देता है और in the presence of ATP, S-adenosine methionine से वन एमिनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ACC बनता है और राइपनिंग इसी प्रोसेस के दौरान राइपनिंग में IAA कैल्शियम आयंस साइटोकाइनिन वुंडिंग एनेरोबायोसिस से भी ये इसमें इस प्रोसेस के दौरान हेल्प करते हैं और फाइनली ACC से इथाइलिन का प्रोडक्शन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड plus ammonia and carboxylic acid are formed. ये है इसका biosynthesis of ethylene. Regarding the site of ethylene biosynthesis, the shoot apex appears to be the principal site in seedlings. Nodes of dicot seedlings produce more ethylene than internodes. Roots produce relatively small amounts of ethylene. Leaves and flowers and fruits also produce ethylene, which increase during senescence and ripening. इथाइलिन के प्रोडक्शन की साइट के लिए जो डाइकॉट प्लांट्स के अंदर जो नोड्स हैं वहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनोड्स और रूट्स के अंदर कंपैरेटिवली ये कम बनती है। लीव्स फ्रूट्स और फ्लावर्स में इथाइलिन बनती है और स्पेशली ड्यूरिंग सेनेसेंस और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। थैंक यू।